वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंस बातचीत एंड कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन। मुझे पता है बहुत सारे लोग इसको नेग्लेक्ट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि यार मुझे क्या लेना देना पब्लिक स्पीकिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में। बट इस सब के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज द वर्ड्स वन स्पोकन cannot be taken back. हम जो बोल रहे हैं उस पर काबू व कंट्रोल रखना जरूरी है। एंड दैट इज वाई today's podcast guest Sagar Ranshur, who is a business coach. He teaches, he trains clients every single day. He has immense knowledge and he will share with you in this podcast. Keep watching. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंस बातचीत एंड आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, या मैं बोल सकता हूँ बातचीत। लिटरली ये हमारा जो सीरीज है उसको डिपिक्ट करता है एंड दिस इज समथिंग वेयर आई कुड लर्न प्लस व्यूअर्स भी सीख सकते हैं। एंड हियर वी हैव अ गेस्ट सागर रणशूर। हाउ आर यू सागर, कैसे हो? Thank you. I'm absolutely great. Absolutely great. How are you, buddy? आई एम फाइन, आई एम फाइन। सो जब मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या करूं, लाइक आई ऑलवेज हैड यू इन माइंड कि मुझे सागर अंशुल के साथ Okay. इस टॉपिक पे बात करना ही है। बिकॉज आई यूज टू लुक एट ऑल योर मैंने आपके इंटरव्यूज भी देखे, आपके पॉडकास्ट भी देखे। एक यूट्यूब में आई थिंक पहले से ही एक पॉडकास्ट है, तो आई वॉज प्रिटी इम्प्रेस्ड बाय दैट। नाउ टू द व्यूअर्स आउट देयर, आई थिंक उनको आपका ओवरव्यू जानना है कि आप क्या करते हो, तो क्या आप कुछ बोल सकते हो अपने बारे में? Okay. So first of all, thank you for calling me. Okay, it's been a great Welcome. pleasure being here. Yeah. My name is Sagar Anshur. I'm the founder and CEO of Shark Talks, certified by University of Cambridge, multiple public speaking competitions award winner, youngest anchor for the Vice President of India, and I've spoken in front of more than 20,000 plus audience. This is Sagar Anshur, India's youngest business communication coach. Thank you. Pretty impressive सागर। I know, I want to tell the viewers, मैंने सागर से कब मुलाकात की। So basically सागर also has a restaurant in Thane known as Tucking Square. Yes. So वहाँ पे हमारी पहली मुलाकात थी एंड मुझे पता नहीं था कि सागर इज इनटू पब्लिक स्पीकिंग। शायद उस टाइम शायद आप पब्लिक स्पीकिंग या बिजनेस कम्युनिकेशन में उतरे थे। I think मैं it is पब्लिक about... स्पीकिंग कर ही रहा था, बट आई वाज Okay. नॉट कोचिंग इट ऑन ए प्रोफेशनल लेवल. अच्छा, ओके, ग्रेट। सो पब्लिक स्पीकिंग से पहले एक जर्नी होगा आपका, राइट? व्हाट लेड यू इनटू पब्लिक स्पीकिंग? कैन यू जस्ट टेल आवर व्यूअर्स अबाउट क्या जर्नी रहा है आपका? Okay. So then I come from a pretty good family background. My dad is into income tax. My mom used to work as a teacher. So Okay. family was all good. Okay. But I was a very dumb student in my school time. So I was not good Okay. in sports. I was not good in any art. I was not good in studies. I was not very good looking. So I said come on, a Sagar. very Come on, very Sagar. average, very nahi, Good looking है, school come time, on. school time. So I was a very very average student. ठीक Okay. है, और ऐसी एवरेज स्टूडेंट के लाइफ में आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, आई रिमेम्बर. और एक दोस्त आता है और वो बोलता है कि बड़ी 50 रुपए भर के ना एक मीटिंग को जाना है, और अच्छा. वो मीटिंग में पूरा तुम्हारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी. मतलब तुम अभी 16 साल के हो ना, तो मीटिंग में 17 साल के 18 साल के ऐसे लोग आने वाले हैं ना, जो अपनी BMW लेके आएंगे, जो अपनी ऑडी लेके आएंगे. क्या बात तो है? तो मेरा तो दिमाग फट गया सुन के कि अरे ये किधर हो रहा है, कौन सी दुनिया है, मेरे को बताओ. एंड आई वेंट टू दैट मीटिंग. इट वाज इन एन ऑडिटोरियम. Okay. और मैंने देखा कि 24 साल के 23 साल के बच्चे अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे. इट वाज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी. ओके, सो दैट यू माइट नोन अबाउट वो मेंबर बनाओ, ये मेंबर करो, बना वो के, करो. हाँ ये हाँ, द चेन. आई हैव अटेंडेड दैट. Correct. या यस. सो देन मैं 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था स्कूल में, और जिसने पहली बार ये देखा है कि बच्चे सूट पहनते हैं, जिसने पहली बार ये देखा है कि लोग के जेब में पैसा है, जिसने पहली बार ये देखा है कि young students and young professionals are having their own cars and everything. And I got crazy कि Okay. यही चाहिए दुनिया में, और कुछ नहीं चाहिए, यही चाहिए हमको. Okay. And then I joined that company. I was working with that company for 3 years, 8th, 9th and 10th.
Okay. What Okay. happened is, in that period, I did not earn much from that company, but I went mad in network marketing. एक तो Okay. क्या हो गया, 8th standard 9th standard के एज में I started reading a few things on Mm-hmm. how to do network marketing and how to do business, और ये सारी चीजें मैं देखने लग गया, पढ़ने लग गया, सुनने लग गया, ये सारी चीजें हो रही थी. और Okay. दूसरी बात ऐसी थी कि मेरी एक कुछ 50 60 70 लोग की मेरी भी टीम इनिशियली स्टार्ट हो चुकी थी. तो Okay. दिस पीपल यूज्ड टू प्रेजेंट मी लाइक कि 17 साल का लड़का है, देखो क्या कर रहा है, 16 साल का लड़का है, देखो क्या कर रहा है. तो इतना स्पेशल तो कभी जिंदगी में फील नहीं हुआ था मुझे. Okay. एंड आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. मैंने घर पे बोल दिया था कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ करनी है नहीं, ये पढ़ाई करके कुछ हो नहीं रहा है, मैं बनूंगा करोड़पति, तुम देखो. And reaction क्या था? और घर वालों ने दिया झापड़. That's So then that is how I left that company. So everything went off over a period of time. The Okay. friends I made there, they went off from my contact list. Mhm. जो चीजें कुछ मैंने सीखी थी वो सारी चीजें चली गई. There was only one thing which remained with me throughout this the next 10 years, and that was the power of seeing bigger dreams. Okay. उसके बाद अगर सुकेत मेरे को मुझे मिलने आया और मुझे उसने बोला ना कि सागर ये ऐसा कुछ बिजनेस है, इसमें से अपन 10 रुपए दिन का कमा सकते हैं. तो Okay. फॉर एग्जांपल वो दैट इज सेलिंग दिस पेन ड्राइव. ओके, सो Okay. ऐसे ऐसा पेन ड्राइव है, इसको बेच के 10 रुपए अपन कमा सकते हैं. तो मेरे दिमाग में मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाएगा. एक दिन में 10 बेचूंगा, फिर 10 लोगों का टीम बनाऊंगा, फिर 100 बेचूंगा, फिर 1000 बेचूंगा. तो Okay. एक दिन पेन ड्राइव का राजा बन जाऊंगा मैं. तो Okay. दिस मेरा विजन उस टाइम पे खुल गया था. Great. And that is where I started doing it later. I was not doing public speaking, but Okay. I somewhere understood how to connect to people, how to talk to people, how Okay. to convince people. ये सारी चीजें मैंने वहां पे सीखी. उसके बाद फिर I did my bachelor's of mass media. I did masters in public relations. I was working in a public relations agency. Okay. When I was working in an agency, it was a leading agency. Mhm. So things were all good. My first interview, I got cracked. I got my job. Everything was doing good. Okay. मगर वो जो the power of seeing bigger dreams ना, that was haunting me every night. Okay. कि सागर अगर ये करेगा ना तो क्या लगता है, कब तक ऑडियो आएगी अपनी. तो सही बोला. now I had two options. एक तो settle for what I would get in my life, or do something which would through which I can make something big. Okay. So I had my college colleague. So she was working with Z that time. She was the production manager there. Okay. I met her and I told her कि देख मुझे तो लग रहा है अब देख अपन दोनों नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, things are doing all good, मगर यही करते रहेंगे ना तो अपन बहुत बड़े नहीं बन पाएंगे, अपने को कुछ तो अलग करना पड़ेगा. That was a 21-year-old guy speaking. Okay. Okay. तो उस टाइम पे जो मेरी थॉट प्रोसेस थी वो मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है अपन ने कुछ अलग करना चाहिए. तो क्या कर सकते हैं अपन? तो लेट अस स्टार्ट अ स्मॉल रेस्टोरेंट. ओके, लेट अस. रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ लिया था. तो रॉबर्ट कियोसाकी ने तो बताया था कि स्टार्ट बिल्डिंग एसेट्स, दैट एसेट्स विल गिव यू मनी एंड एवरीथिंग. तो एक छोटा सा एसेट बनाते हैं जिसपे थोड़े दिन अपने को मेहनत करना पड़ेगा. इनिशियली इट विल बिकम एन एसेट व्हिच विल कीप रिटर्निंग थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम. We started a small 8x8 ka restaurant. I believe you have been there. Very small restaurant, very small place. Yeah. Okay. With 2 employees and with 2-3 employees and we both, and ekdam chota sa restaurant we started. Now in the span of 2 years today, God's grace, the restaurant is turned into a 350 square feet proper cafe, and it is running on my own. Great. And that is when I decided. एक तो क्या हो चुका था कि जब एक रेस्टोरेंट ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, उसके बाद I started entering into business community. I started hanging out with business owners. I started meeting, talking to them, and that is how I got to know about there is something called business networking organizations. There are business networking organizations where all businessmen come together and help each other to grow their business. There were people who had very good turnovers. There were people who were doing very good in जिनका प्रोडक्ट अच्छा है, सिस्टम अच्छे, लोग अच्छे, मगर 100 बिजनेसमैन सामने बैठे और वहां पे बात करना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, अपने सिस्टम के बारे में बताना है. तो they were not able to speak effectively.
Okay. Now Okay. in this last in this last from my in my college days मैंने तो बहुत public speaking competitions किए, तो ये सारी चीजें हो ही रही थी, मगर दैट केम टू अ फुल स्टॉप कि चलो कॉलेज के साथ ये कॉम्पिटिशन्स खत्म हो चुके, नाउ इट्स टाइम टू गेट ये इनटू रियल वर्ल्ड. सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये हाँ जो हाँ. बड़े जो बिजनेस ओनर्स है, ठीक है, वो स्टेज फियर की वजह से बोल नहीं पा रहे थे, और वेर दे इनकेपेबल, लाइक क्या था? स्टेज फियर ही था. की वजह से बोल नहीं ओके. पा रहे थे. फॉर ओके. एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे कुछ ड्राइंग करना है, ठीक है, हाँ. एंड यू डोंट नो हाउ टू ड्रॉ, ओके. so that is because you have not learned how to draw. राइट. Okay, राइट. so when it is about drawing, you say it, I don't know how to draw because I have not learned that. But when Correct. it comes to public speaking in front of people, Hmm. लोग ये बोलते ही नहीं है कि we are not able to speak effectively because we have not learned this skill. Correct. They say कि we have stage fear, we have stage anxiety, we get Hmm. nervous. Yeah. So it is not because you have stage anxiety, it is because you have not learned this skill of public speaking. Correct. So that is when I started helping other business owners कि ये देखो ये skill है, ये मैंने भी सीखा है, ये आप भी अगर सीखो तो you can promote yourself in a better way, you can present yourself in a better way, and you can start generating more business from this organization. A few of them started listening to me, उनकी help हुई, and then I took a decision कि नहीं, ये this is not a very limited, these are not very limited people, there is a huge big audience of business owners who can do, Okay. who can create big companies, but that is just just because they are not able to speak and Speak. represent their companies well, Okay. that is the reason they are not able to get that much business. And I Okay. decided कि from now Hmm. I am going to help these business owners to become powerful communicators. ग्रेट. क्या ग्रेट जर्नी है, ग्रेट स्टोरी है सागर. मुझे पता नहीं था इतना सब किया करके. आई डिडंट नो दैट. ग्रेट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज पब्लिक स्पीकिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस में आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? ऑफ कोर्स आपने अभी थोड़े बहुत चीजें तो बताया, बट व्हाट डू यू लव अबाउट इट, एंड एज वेल एज अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू हेट अबाउट? Okay, so what I always say this thing, let us first talk about love. So I always say this thing in my trainings and my workshops, everywhere I go, that when you speak to someone off stage, you create a friend, but when you speak to someone on stage, you create a fan. ओहो, क्या बात कही है. So when you speak on stage and when you speak effectively, when you speak which can influence the audience in front of you, he will either become your loyal customer, or he will become your promoter, or he will refer you to 10 other people, or he will वो सामने वाले के दिल में आ जाता है कि मुझे इससे दोस्ती करनी है, तो he will do something कि वो किस तरीके से आपका दोस्त बन पाए, कांटेक्ट कर पाए या कुछ भी हो. जैसे जो लाइक स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ भी यही होता है कि हाँ ये बंदा अच्छा कॉमेडी कर रहा है, कूल है, let's have a photo with him, let's promote him, let's share his content and everything. Yeah. So you get visibility, you get credibility, you get fame, right. You are able to do mass selling at the same time, you represent yourself like a dominant leader in the industry. Okay. So these are some things what I love about the skill of public speaking. Okay. And the hate part? The hate part is कि I won't call it is a difficult skill. एक बार अगर आप सीख गए ना skill को, तो आप कोई भी इंसान, it has nothing to do with whether I'm an introvert or I'm an extrovert, or I speak well or I don't speak well. It has nothing to do about that. अगर आप एक बार ये skill सीख गए ना, आप बात कर पाओगे. मगर this skill, when you are presenting this skill, you have to be very very careful about presenting yourself, because you are not in a field of writing where you can write something, if you don't like you can erase it. You are in a field of speaking. Correct. Once the word is gone, you cannot take it back, so you have to be very very careful. Great point. Speaking, very very important point I believe. बहुत बड़े बड़े स्पीकर से एक गलत शब्द ने उनको बर्बाद किया है, तो जितना सर पर उठाती है ऑडियंस, उतना ही नीचे गिराती है. सही कहा आपने, सही कहा. करेक्ट. So Sagar, now a bit out of topic, I would say,
पता नहीं कितने टॉपिक में जाता है ये क्वेश्चन, बट व्हाट डू यू फील अबाउट लाइफ, जस्ट लाइफ, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? देखो, this corona situation has made me more go deep into what you actually are, and your what is the reason of you to live, and is this only money which is driving you day and night, or is there anything else? So initially when I started up coaching, एक तो मैं वो रेस्टोरेंट से तो पैसा थोड़ा बहुत बन ही रहा था, तो ब्रेड बटर का तो प्रॉब्लम नहीं है। मगर कोचिंग में द मोमेंट आई एंटर्ड, आई सॉ कि अरे कितने लोग हैं जिनकी मैं जिनको मैं बता सकता हूँ कि मैं ये चीज सिखाना, उनका बिजनेस बढ़ सकता है, मैं उसमें से बहुत पैसे कमा सकता हूँ। तो इनिशियली आई वाज लाइक दिस, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी ये ही लॉकडाउन में मैंने 2-3 बुक्स पढ़ी है। वन ऑफ देम इज द सीक्रेट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड ये सारी बुक्स I've read in this this 3-4 months ka span. See, what I've realized is a human being is a social animal, and once he's gone, the only thing which remains, why people remember him, is on basis of how much did he help others to do well in their life. So as a responsibility, yes, as a responsibility also, as a coach also, it made me so much aware. सागर देखो कैसा है ना, पैसा तो आएगा यार। देखो तुम अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हो, लोगों को पसंद आ रहा है, लोगों की हेल्प हो रही है, उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो पैसा तो बैंक अकाउंट में भरना ही है। बराबर। मगर योर फोकस, इफ योर फोकस इज टू कार्टोफाई योर क्लाइंट, तुम 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ये कर सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म गेम नहीं कर सकते। So then what my focus should be? My focus should be on helping people. आज मेरे पास public speaking की skill है, you have some other skill, someone else has some other skill. लोगों को क्या लग रहा है कि मेरे दिमाग में to 1 to 10 में अगर काउंट करो तो 7 इंफॉर्मेशन है, तो वो 7 लेके जिंदगी भर उसकी अकड़ बता रहे हैं। They don't keep their brain flowing, जो है उसको निकालो, फिर नया भरेगा। तो भरेला ग्लास तो तुम 10 साल रखोगे, तुमको लग रहा है बहुत अकड़ है और बहुत नॉलेज है, तुमसे अगर किसी इंटेलिजेंट इंसान से मिल गए तो वो तो तुमको बता देगा यार कि तुमको कितना पता है, कितना नहीं। भरा हुआ चीज हमेशा एक टाइम के बाद कंटामिनेट होता ही है। yes so now see, if you see my wallpaper right now, so this is my wallpaper, there's a question here, यहाँ पे there's a question, the question says, did you help at least one person turn into a powerful communicator today? So my whole purpose of living right now is to every day I want to help one person at least. वो कितना पैसा देगा नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने एक साल में 365 लोगों की हेल्प की ना, उसमें से 100 क्लाइंट्स तो बनेंगे, तो 10-20 लाख रुपए तो उधर से आ सकता है। मगर माई फोकस विल जस्ट बी ऑन, मुझे हर रोज एक इंसान की मदद करनी है। तो दिस ये तरीके का माइंडसेट आप तभी डेवलप कर पाओगे जब भी आपको पता चल जाएगा कि मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हेल्पिंग पीपल। राइट। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट सडनली माय लाइफ, एट लीस्ट कि माय पर्पस ऑफ लिविंग इज टू हेल्प पीपल बिकम पावरफुल कम्युनिकेटर्स। और ये फैंस बनेंगे, पैसा आएगा, ये दिस ऑल आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ यू हेल्पिंग पीपल। नाउ यू स्पीकिंग लाइक दिस, नो मैं फैन बन गया हूं आपका, मैं फैन बन गया हूं। थैंक यू, कीप ऑन डूइंग दिस ग्रेट थिंग, लाइक बहुत ही अच्छा आइडियोलॉजी है आपका। थैंक यू सो मच। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग में व्हाट डू यू वांट योर ऑडियंस टू रिमेंबर अबाउट यू, लाइक आफ्टर यू गिव योर पब्लिक स्पीकिंग और आप कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो कोई भी क्लाइंट को, व्हाट डू यू वांट दैट ऑडियंस और दैट क्लाइंट टू रिमेंबर अबाउट यू? ओके, सो सी, अगर हम इंसान के ब्रेन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें ना, तो इट इज एवरीथिंग व्हाट यू सी, हियर एंड लिसन गेट्स स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस ब्रेन, बट नॉट एवरीवन हैज ट्रेन्ड देयर ब्रेन सो मच कि कभी भी उनको कुछ भी पूछो उनकी जिंदगी में जो हुआ है उसको फटाक से रिकलेक्ट कर पाएंगे। तो आई नो ऑलमोस्ट 90% ऑफ माय ऑडियंस विल फॉरगेट
what I said. About Okay. 90% of my audience will forget the information I've given. About Okay. 90% audience will forget the strategies, what I spoke on, the importance of public speaking, my body language. Maybe some of them may forget my name, my face. Hmm. But there's one thing which your audience will never ever forget is Okay. how you made them feel. So the True. whole purpose of me speaking in front of the audience is Hmm. just to make them feel like that they have never ever felt in their life. And if I am able to do that effectively, Hmm. they are never ever going to forget my name. They're never Correct. ever going to forget my face. They're never ever going to forget how I made them feel that moment. True. So It's this is the power of any speaker, and this is something which the audience will never ever fail. This is what I want, me to be remembered by. right. We went to Sagar's workshop, and Hmm. the vibe of what he created there, we will never forget that. करेक्ट ग्रेट सो सागर ऐसा तो बहुत बार हुआ ही होगा लाइक पास्ट में दैट माइट हॉन्ट यू कि आपने कुछ सोचा होगा दिमाग में कि ये मुझे बोलना है बट तब वो हाँ मुंह से आया नहीं कुछ और ही बोल रहे जैसे आपने बोला था कि बैड पॉइंट अबाउट द बैड पब्लिक स्पीकिंग बिजनेस कम्युनिकेशन यू शुड नो व्हाट यू स्पीक ठीक है yes एक yes बार बोल दिया तो वापस तुम पीछे लाइक कर नहीं सकते द एपोलॉजी पार्ट भी एपोलॉजी बोल दोगे yes बट वो दिमाग में रहेगा कि ये बंदे ने एक उसका बार उसका बोल दिया मतलब नहीं है मतलब कुछ. नहीं है क्योंकि एक बार वो कट गया तो नॉट तो बन ही जाता है मतलब Yes, गार्ड तो रहेगा ही yes. सो ऐसा कुछ सिनेरियो है आपके साथ कुछ फनी मोमेंट्स या कुछ ऐसा कोई भी Thi- सिनेरियो this is for all those people जो who come to me and say, सर मैं क्या उसको बोलते हैं, जो जो कम बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, forgot that word. जो Who are कम introvert. Okay, इंट्रोवर्ट हाँ अच्छा हाँ. ओके So but this is for all those people who come to me and say, sir, हाँ I am introvert. हाँ Sir, I am extrovert. Sir, I am good at speaking. Will I be good at public speaking also? Sir, we have some kind of an inferiority complex. Sir, we have stage fear. Sir, we have stage anxiety when we go on stage. So, I'm going to share you one story of my life which Okay. will prove everything what people say is that the myths what they carry in their brain, why are they not able to speak effectively in front of a large audience, will Okay. vanish. Okay. Oh, So I okay. still Ready. remember I was in first year of BMM. Okay, I did Okay. bachelor's of mass media. I was in first year और मुझे बहुत बोर हो रहा था लेक्चर में, मतलब I just wanted to get out of the class. Okay. और मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, बंक करूंगा तो फिर वो 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, मैं वो सब सोच रहा हूँ तो क्या कर सकते हैं. दैट इज व्हेन वी गेट a notice in our class. There's Okay. this festival, there's this competition called as Youth Festival. This is the biggest competition, in the state. It is a university level competition. And Okay. there are many competitions इसके अंदर. डांस है, सिंगिंग है, क्लासिकल है, वेस्टर्न है, बहुत सारी Okay. चीजें. There's something called elocution also. अच्छा Elocution is okay. where you need to go and speak on a certain topic for 5 minutes. So I Okay. was very good at talking to people around me, talking with my friends. I was very good in that. तो Okay. मैं तो डांस नहीं कर सकता, क्रिकेट नहीं कर सकता, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, चलो बोलने में तो अच्छा हूँ, तो ये करते. तो आई वाज प्रेटी कॉन्फिडेंट कि अरे अपन तो ये तो कर ही सकते यार. तो आई गॉट माय टॉपिक, आई प्रैक्टिस, थोड़ा रिसर्च किया, पॉइंट्स निकाले, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कि ऐसे बोलूंगा, सब हो गया. And I get a call from my professor ki Sagar, the competition was on the 4th of August. I get a call on the 1st of August. The professor tells me that tomorrow, whatever speech you are writing, whatever speech you are going to speak in the competition, you have to present the same speech in front of our principal madam. So then she would listen to your speech and suggest you, if there are some changes which have to be done or anything like that. I was like, all right, no problem. मैं घर पे गया और 2-3 बार मैंने पढ़ लिया. मैंने बोला हाँ ठीक है यार, मैं तो बोल पाऊंगा यार, मेरे को तो आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है. मैंने मेरे दोस्त को बिठाया था, मेरे दोस्त को बोला था तेरा भाई देगा आज क्या मचाने वाला है. So I was very very confident about कि ये तो होने ही वाला है. Okay. Next day, I call my madam. I tell her कि madam, I'm in college. Where should I come? So she tells me कि Sagar, come in the auditorium. Okay. So the moment I heard auditorium, मेरी थोड़ी सी जमीन खिसक गई.
ऑडिटोरियम में क्यों बुलाया है? Okay. But then I still, gathered that courage. अरे नहीं हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. हाँ. I went in the auditorium. The moment I entered, there were 250 students sitting in that auditorium, full pack auditorium. In Okay. the front line, there are 10, 12 professors. There is our principal madam sitting in the center. There's someone with left with a buzzer in his or her hand. Okay. So we get a time slot of 5 minutes. जो भी तुमको करना है, you have to speak in this 5 minutes. So I enter the auditorium. My madam, introduces me to the principal madam. This is Sagar, is a first year guy, वगैरह वगैरह. I go on stage. I see 250 people looking at me. The person in the left says, Sagar, your time starts now. Okay. Okay. And there is utter silence in the entire auditorium for 30 seconds. मेरे पैर कांप रहे हैं. My breathing is got heavy. My throat is dry. I have forgot everything. Blank. There's a professor, just sitting next to me, telling me, "अरे कुछ तो बोल, नाम तो बोल, कुछ तो बोल." मेरी फटी है. I am not. My hands are all sweaty. I am not able to speak one word. Finally, my friend called me. He pulled me out of the auditorium and said, "देख सागर, तेरे से तो नहीं हो पा रहा ये. There's no need to do that. You cannot do that. This is not something you're born to do. Okay. Instead of putting name into trash or college name into trash, it is better you don't go into that competition." Okay. That was my first experience. That the first feel I got about public speaking. कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि नर्वस है और स्टेज फियर है और इंफीरियर है और और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, मैं बोलने में अच्छा हूँ. मैं बोलने में अच्छा था. मुझे लगा कि अगर आई कैन स्पीक गुड ऑफ स्टेज, आई कैन इवन स्पीक गुड ऑन स्टेज. बट दिस आर टू डिफरेंट स्किल्स. Right. That was the day when I decided कि देखो दो ऑप्शन है सागर. एक तो ये इसके बाद जिंदगी में नहीं करना है कभी भी, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ये क्यों ऐसे हुआ. That question will remain always in my mind कि ये क्यों ऐसे हुआ. So I started researching about that. What does happen when you go on stage? Why do your breathing gets heavier? Why your legs start shivering, and why does this happen? And from there I started understanding about कि अरे ये तो skill है, ये सीखना पड़ेगा. This is natural. If I if my legs shiver, if my throat gets dry, this is normal because I'm not used to doing that. Right. And this is a memory which haunts me every time. I always tell people कि मैं इतना बुरा स्पीकर था. अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशंस कोच बन सकता हूँ तो तुम तो बहुत ही अच्छे हो यार मेरे से. तुम तो बन ही सकते हो. तुम तो बहुत अच्छे पावरफुल स्पीकर बन ही सकते हो. कोई डाउट ही नहीं है. करेक्ट. मजा आया सुन के ये स्टोरी. एक्चुअली ये जो फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है ना ऑडियंस के साथ, आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स ने ये किया होगा. लाइक नॉट जस्ट पब्लिक स्पीकिंग, या डांस में भी अगर आप स्टेज में आके एंड देन यू सी अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, एक वो सुन हो जाता है. राइट. इट इज क्वाइट रिलेटेबल. मेरे साथ भी हुआ है. you cannot tell this to people क्योंकि लोग हंसेंगे अगर तुम लोगों को बोलोगे ना मैं ब्लैंक हो गया, मैं ये हो गया. See, for example, the reason why I felt that I should turn my life in serving and helping business owners to become powerful speakers is because if I want to become a lawyer, I have lawyers around me whom I can go and ask how to become a lawyer. If I want to become a chartered accountant, I will go and ask chartered accountants how to become a chartered accountant. If I want to become an engineer, I will go and ask engineers. Right. But if I want to speak effectively in public, there is no one around me who is a public speaking coach. You can tell me, Sagar, this is natural, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे ये इस सिस्टम को फॉलो करो, फॉर्मूला है करके. तो मैं अगर स्टेज से बाहर निकलूं, if I do bad in say some history subject, और मैं स्टेज से उतर रहा हूँ, तो देयर इज माय हिस्ट्री प्रोफेसर टेलिंग मी क्या रे ये गलत हुआ, this is how you can improve your presentation. But if I do
bad in public speaking, there are only people laughing at me. There Correct. is no one who can normal, कोई टेंशन नहीं है. ये ऐसे ऐसे करके you can improve this. So this was one of the main reasons why I decided कि नहीं, इस इंसान की जरूरत है जो उनको Okay. बताएगा कि ये नॉर्मल है और ये सीख सकते हो और कोई भी इंसान ये कर सकता है. लाइक आपने जो बोला ना कि लाइक हर एक फील्ड में कोई, चलो सीए हुआ तो कोई सीए के साथ गाइड कर Correct. लेगा, ठीक है. इन शॉर्ट Correct. आपका कोई मेंटर नहीं रहा है, राइट? यू डिड इट लाइक बाय नहीं. योरसेल्फ, कोई मेंटर नहीं रहा है, Yes. बट देयर माइट बी समवन हु माइट इंस्पायर यू इन दिस फील्ड, लाइक स्पीकिंग में कोई है ऐसा कोई आइडल? There were few people, you know, who I used to follow a lot. ओके. तो मेंटर्स थे नहीं बोलने से अच्छा ये होगा कि मेंटर्स थे मगर they were not in my reach. ओह, ओके. CA, lawyer, these all people are in my reach. There were people who were driving Aston Martins and Bentleys on, you know, just being a public speaking coach. ओके. But they were not in my reach. मेरे को अगर उनकी एक मीटिंग या फिर एक वर्कशॉप में जाना है तो लाख रुपए भरने हैं. किधर से भरूंगा? कॉलेज का बच्चा किधर से इतना पैसा भरेगा? ओके, राइट. So then one of a person who I follow a lot when it comes to communication is there's a person called Dan Locke. Dan? Dan Locke. Okay. DANLOK. Dan Locke calls himself as king of high ticket selling. Oh. So he coaches how can you pitch high ticket clients and convert them into your clients. So he is more into content writing, but an amazing public speaker. So there's this person whom I follow a lot. Okay. You know, when it comes to public speaking. Apart from that, now I've been learning from India's one of the biggest celebrity graphologists. His name is Mr. Vineet Bansode. So I've been learning so much. Vineet Bansode, sir. So I've been learning a lot from him right now. There's someone who helped me in this journey. There's a person called, he's also a public speaking coach from Mumbai, but he's more into mindset coaching. His name is Samir Narad. Mindset coaching, what does that mean? Mindset coaching? He tells you how you should think. Okay. See, एक छोटा सा example से मैं बताता हूँ. Your brain is always in search of drama. Always in search of drama. जहाँ drama है वहाँ पे brain को जाना है. I'll give you one small example. Now, Suket, you go to a picnic with your friends. एक ट्रिप पे तुम और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स चले जाते हो. और अगर उस पिकनिक में सब अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम आया नहीं ना, that entire memory will vanish in a few years. Yeah, got it. बात ही नहीं करोगे उसके बारे में. मगर अगर उस पिकनिक में कुछ एक्सीडेंट हुआ, किसी को कुछ हर्ट हो गया, कोई बड़ा सा मेजर एक्सीडेंट तुमने देखा, कुछ भी, if anything goes wrong, every time you and your friends come together and talk on the same topic every single time, कि कैसा मजा है ये देखने में. So your brain is always in search of drama, but over the period of time you have programmed your brain in such a way that it is always looking for a negative drama. And media houses have spent crores of rupees in doing this research. We can see that. Not, yes, ये वो positive news show करेंगे, तुम नहीं देखोगे. Yeah. So then, mindset coaching is more of how to reprogram your brain and make your brain in search of positive drama, and how to keep your brain constant there. Okay. So how do you prepare a system for you where your brain is always looking for positive drama, which encourages you to learn, hear podcast, which encourages you to, read books, talk to influencers and everything. Okay. Now which here is eventually helps you to grow in your life. Acha. Okay. Now here is like two questions into one. Now many clients come with you, like सामने आके आपको problems बताते हैं, and then you have some sort of strategy in your mind, right? कि ये strategy है. Yes. So हर एक business clients के अलग अलग problems रहेंगे, right? And how do you look at it? आप वो problem को कैसे solve करते हो? And as well as one more aspect कि what does it take out from you, like physical and mental, बोल सकता हूँ physical and mental stress क्या कितना लेता है आपसे?
So number one is, but now this question, there are two different questions. Right. One is about how do I actually help my clients, and what is the system what I follow. So number one, I'll go to first question first. See, Yeah. every business owner, especially every young business owner, initially when he's starting a business, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि he often, you know, feels doubtful about his decisions. He's Okay. fearful of taking right decisions. He feels confused with over information. Okay. He often feels lonely because when the bad time comes, there is no one, you know, with him to stand. Correct. या फिर many a times young business owners have short term visions about their business. ऐसे ऐसा करेंगे, 10 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे, खत्म. Right. एंड ये सारी चीजें जब भी उनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चैलेंज आ रहा है, तो दे विल एंड अप डूइंग नेगेटिव सेल्फ टॉक्स. Okay. They will doubt on their self, they will doubt on their skills, they will start doubting on their abilities, and which will, you know, decrease the growth of their business. Okay. So number one, I help young business owners to communicate with themselves effectively first. Okay. How to do self talk, how your mindset should be, what you know, what system you should prepare around you that will help you do positive self talk. How what is the right kind of mindset you need to build in this age in order to become a good and powerful businessman in your coming future. So that is number one, how to communicate with self. Number two is, the only responsibility of any business owner is to get work done from others. But this is the biggest challenge of any business owner. क्योंकि मैं एक तरीके के लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे टीम से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे पार्टनर से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे इन्वेस्टर से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे बैंकर से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे मेंटोर से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं मेरे कस्टमर्स से बात कर रहा हूँ. ये सबकी नीड अलग है, ये सबसे बात करने का तरीका भी अलग है. अगर मैं एक ही सिस्टम में सबसे बात करूं, that may give me result in talking to my team but not with my investors. Correct. So second level where I help them is, I help them in understanding how to communicate with people around you, and how should one start creating a strong network. See, एक छोटी चीज है, if you are into business, अगर तुम्हारे लाइफ में सुकेत कुछ प्रॉब्लम आया ना, so the first people who are going to run for you are your friends. Correct. Why do you expect your friends to come into the problem of your business? They will not. They won't. Right. तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया तो तुम्हारे हेल्प के लिए तुम्हारे फ्रेंड्स है, मगर बिजनेस के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आया तो डू योर बिजनेस हैज इनफ फ्रेंड्स, समझ गया, जो फ्रेंड्स तुम्हारे बिजनेस को हेल्प करेंगे. This is called the power of networking. You need to have a strong network of business owners and businesses which will help your business in crucial time or challenging time. So I also coach them how to build a strong, sustainable network and build relations with them. Number three is, a business owner gets maximum opportunities to speak in front of public. कॉन्क्लेव्स है, इवेंट्स है, सोशल इवेंट्स है, मीटिंग्स है, नेटवर्किंग मीटिंग्स है, टीम के सामने हो, इन हाउस इवेंट्स हो. तो बिजनेस ओनर विल गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. Now this is an opportunity to create credibility, this is an opportunity to do mass selling, this is the opportunity to create fans, this is the opportunity to position yourself like a leader. This is the opportunity where you share your vision with your team and bound them all together in, you know, in one basket. Right. But majority of business owners don't take this opportunity. They fear of speaking, they feel nervous, they think no, this is not me who can do that. And they are somewhere pulling the growth of their business. So number three is, I help them you know, in making them understand how to communicate in front of masses, and now how to communicate in front of camera, which is altogether a different skill, digital speaking. So these are three ways how I am helping business owners.
Okay, okay. And What was your yeah. number 2 question? Number 2 question is मतलब वो physical and emotional aspect क्या जाता है आपका? Yes. Like what does it take? See, they say that every invention which happened in this world happened for 2 times. Once Okay. in the mind of the inventor, and second in the physical term. Okay. So public speaking is 50% mindset game and 50% skill set game. Okay. अगर Okay. पब्लिक स्पीकिंग सीखना है तो लोग क्या करते हैं, लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, लोग गूगल सर्च करते हैं, लोग कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं which only tells them about the skill set of public speaking. Okay, Correct. use a certain kind of a bass when you have to create dominance. Okay, have this kind of a voice modulation, or you use your hands while you speak, use your expressions effectively, look into the camera while you're speaking. So yes, Yeah. this all are the skill set of public speaking. Now Correct. this are all correct. Mm-hmm. Down the line, do you believe that you can be a powerful speaker? That is my question. Yeah. And majority times the answer is no. I don't believe I can be all that. I can be Dan Locke one day. I don't believe that. So the first, my challenge, the biggest challenge for me is to make them realize that you can be a powerful speaker. Now, once this belief, this mindset of a speaker comes, then everything what I tell them, they are able to implement it this quick. Okay. फिर मैं उनको बोलता हूँ ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो. हर एक बुक से 4 चीजें वो सीखते हैं, and they know how to implement that because they believe they can implement that in their life and make progress in their life. Okay. So these are the 2 things I mainly focus on, the mindset, and also I speak on the skill set of public speaking. Okay, great. Now, what is your vision, Sagar? Like, आपको 1-2 years हो चुका है. What is your vision in the road ahead? क्या देखना चाहते हो? आपका public speaking and जो business communication का जो skill है, उसको कितना expand करना चाहते हो? So I am on a mission right now. The mission is to help 100,000 young business owners to become powerful communicators. Okay. So then it is not about this is the money what I want to earn, or this is the bank balance what I want to have by 2025. But the whole point is to help at least one person every day. Okay. And by 2025, I want to help 100,000, that is 1 lakh young business owners, because this is the next generation which is entering into the business. I want to help them become powerful, because this is the need of the hour. And if these people become powerful communicators, they will be the people who will uplift the economy of the nation. True. Quite. So this is my belief, and this is what I want to do, and this is how I want to help people. And also this is an era of startups, so many youth are taking going into the startup field. So yeah, this will be very, very effective for them. What is your overall elevator pitch? Okay, so elevator pitch is something which I began with. अच्छा. जिसको देख के the 30-second pitch which I gave, and after listening to that you said, "Arey, very good. I liked it a lot." Okay. Why did you like it? Because it was concrete, it was crisp, it was to the point. Okay. We often see when someone asks you, tell something about yourself. हम अभी भी 4th standard का myself बोल रहे हैं. Right. So the whole point is कि prepare a speech which is concrete. So कुछ 5-6 points है which I tell you. The first is your name and how do you help people. That should be your first line. Second is what is your system, through which you are helping that people. Number 3 is a personal story of yours. Why did you start this company or whatever service you're giving. Number 4 is why should the audience care about you or your product. Okay, if you are not able to make them, if your pitch is just for you, that is of no use for them. So why should the audience care? Number 5 is what is your vision and how much people you want to reach, and reach you or your services or your product. Okay, got so these are some 4-5 things. Your qualification, your achievement should be one of the things which should be in your elevator speeches.
So people don't want to listen कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, तुम कहाँ रहते हो, और तुमने कौन से कॉलेज से कौन सा ग्रेजुएशन किया है. सही बात. People don't want to listen to that. People want to listen about concrete, crisp things, and also a point where it tells them that why should they care about what you are listening to. Correct. Sagar, any books that you can recommend to our viewers? समझो किसी को बुक्स पढ़ने का आई थिंक आदत भी नहीं हो, ठीक है, उनको स्टार्ट करना है बुक पढ़ना, सो ऐसा कोई बुक्स है जो रिकमेंड कर सकते हो? ओके, तो मेरे सामने शेल्फ है, तो मैं शेल्फ ही देखता हूं. ओके, हाँ देखो. आई एम वेरी वेरी बैड एट रीडिंग. मैं ऐसा इंसान हूं ना, उसको बुक्स पढ़ने का बहुत कंटाला है. अच्छा, ओके, बहुत कंटाला है. मैंने भी रिलेट हियर. पिछली वाली जो जनरेशन है ना, हमारी जो पिछली वाली जो जनरेशन है ना, वो ये बोलते हैं, जैसे फेमस सेइंग इन मराठी की वाचाल तर वाचाल, इफ यू रीड यू विल सर्वाइव. ओके, सो देन why do they say vachal tar vachal is because that time there were no other resources from where you can gather and take information. The books were the only sources. Television भी उसके बहुत सालों बाद आया. Television is more from entertainment side. Right. Today you have podcasts. Today you have interviews. Today you have audio books. Today you have video books. Today you have book summaries, videos on that. So it is not necessary for you to read if you don't like. Okay. I am very bad at reading. मुझे नींद आता है मैं अगर 3 पेज 4 पेज पढ़ लूँ तो. But I can listen to 6 hours of audio books. एक sitting में मैं पूरी बुक खत्म कर देता हूँ. So I keep a pen and paper in my hand. He's speaking on my chords. Whatever I feel, I note it down. Okay. तो बुक पढ़ने को मुझे 10 दिन लगते थे, ये 6 घंटे में काम हो रहा है. I repeat it again. 2-3 बार अगर पढ़ लिया तो बुक by heart. अच्छा, okay. So then, but there are some few books. You know, overall, the first is to develop and understand the power of your mindset. I would always highly recommend a book. The book is called The Power of Your Subconscious Mind. I love it. Very powerful book. Very powerful book. So this will be very, very good in order for you to develop the right kind of mindset. Okay. Number 2 is I highly recommend. मैं अगर बड़ा हो गया ना तो मैं भगवान के जगह पे ये 2 बुक्स रख दूंगा. इतना this book. If you see my DP also on any social media, I am hugging the book, The Power of Your Subconscious Mind, because that book has created magic in my life. My complete thought process changed. Number 2 is I would highly recommend read Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Very powerful. Very powerful book. And number 3 is how to develop self-confidence and influence people by public speaking. This is more on skill-based. How to influence people and how to develop self-confidence and influence people by public speaking. This is by the ultimate king of public speaking, Mr. Dale Carnegie. Yeah, a famous writer. Yes. Very famous writer. So then once you are ready with your mindset and you are ready where you believe कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना है, और I have that, I have understood the power of my subconscious mind where I can learn the skill, on my terms. Only then you should move towards books which teach you skills. Nahi to that is just information flowing in your brain which is of no use. These are the 3 books which I highly recommend. Okay, Sagar. Sagar, we are at the end of this podcast, and I would like to end this podcast with one last question. Now, assume this is your retirement stage. Okay, this might be your last speech. ठीक है? So, क्या last speech में क्या कहना चाहोगे आप viewers? मतलब आप जो भी audience है सामने, आप last speech में क्या सब कहना चाहोगे, as well as any message to our viewers who are watching this podcast right now? Okay, I have a dream. Okay. I want to die where I am on a bed and there's a camera in front of me and I'm speaking. That would be the best. I am sharing whatever I have learned from my life. I want to help, because this is what I love. This is why I am born to do. I believe. So मेरा end अगर speech होगा तो वो ऐसा ही कुछ होगा, और otherwise
you will find some news where some good famous speaker has died on stage. So Oh. अगर ये दो चीजें अगर है तो then you हाँ, should हाँ, not हाँ. think twice about what that name is. Correct. So Correct. see, if this is my last speech, see there would be a next generation which would be coming. Every time there's a next generation which comes to overcome the current situation. See, हर एक इंसान का स्किल अलग हो सकता है, हर एक इंसान का इंफॉर्मेशन अलग हो सकता है, हर एक इंसान का सेक्टर अलग हो सकता है, वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है, बट देयर इज दिस वन थिंग व्हिच इज कॉमन इन एवरी सिंगल पर्सन एंड दैट इज he or she has to speak. Right. The last I think session of my life, what like bifurcates animals and humans is, I think we speak. Is the ability to communicate, ability right? To think, process, and communicate it. Yeah. So in my last speech also, I would be, inspiring people, telling them about how public speaking changed my life, how communicating effectively changed my life, and how this skill has the ability to transform your life also. Yeah. In my last speech also, I would be, my focus would just be on inspiring people to move towards public speaking and learn this skill and become better and powerful communicators and make the best of their life. I just love your attitude, like towards helping people and also following your passion here, because most of the people, they don't do that, and I find like it's an honor like talking to you, Sagar. बहुत मजा आ रहा है like any message to our viewers at the end, कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं बस है ना, आपको एक छोटी सी चीज है, इमेजिन दैट, इमेजिन अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डर रहे हो ना, बस एक बार बैठ जाओ एक जगह पे, आंखें बंद कर लो और सोचो कि अगर आप वो कर पाए जिस चीज से आप इतने सालों से डर रहे हो, जो पब्लिक स्पीकिंग से अगर आप डर रहे हो, तो जस्ट सिट एट अ प्लेस and you just imagine a life where you are a very powerful speaker. अगर आप शादी में भी जाओगे ना, तो जो इंसान, the manager of the catering, he is not the owner of the catering, he's just the manager who is shouting, अरे इधर प्लेट्स क्यों नहीं लगाया, अगर ये क्यों नहीं हुआ, अगर वो क्यों नहीं हुआ, वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, वो तो ओनर भी नहीं है, मगर जस्ट वो बात इतने पावरफुली कर रहा है और कमांड कर रहा है. We start, credibility and respect and fan following, you are all going to get in your life once you start becoming a powerful communicator. और ये स्किल आपके अंदर है, ऐसा नहीं है कि आपको मैं कुछ और चीज आप में इम्प्लीमेंट करने के लिए बताने वाला हूँ, ये आपके अंदर है. My responsibility is just to make you realize about your skill, and if just imagine if you realize the potential inside you about how powerful speaker you are, your confidence is going to be so high कि सामने कोई भी आ जाए, you will still will be willing and believe that you can win in any situation given. True. Very true. Thank you so much, Sagar, for taking your time. I know great pleasure. I know you are very busy, like I think इससे पहले भी आप public speaking and business communication कर रहे थे, right? अभी भी सेशन है. Thank you so much for taking your time, and it was lovely talking to you. Like बहुत मजा आया. So I'm also sure that viewers जो भी ये देख रहे हैं, they are gonna enjoy it thoroughly, and उनको बहुत कुछ सीखने मिला ही है. Yes. If anyone wants to connect to me, they can connect me on my email. I will just write it down in the description box as well as. I am more active on email and Instagram. Instagram में आप कभी रात के 2 बजे भी मैसेज करो तो भी you will get a reply. Okay. Thank you so much, Sagar. Thank you. Okay. Bye. It was a pleasure meeting you. Thank you so much. All the best. Same here. Bye. Yeah. Bye.